There is something about these roads. They just don't carry goods. They carry stories. गाड़ी यहाँ पे जैसे ब्यूटी पार्लर में आती है, दुल्हन की तरह तैयार होके कि यहाँ से बाहर जाती है. In Pakistan, a truck is just never a truck. It's a canvas, a moving piece of identity, and a voice on the beat. ये मेरा नाम है, चनवेज नाम है. मैं ट्रक आर्ट का काम करता हूँ. तकरीबन 25 से 30 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ. नहीं, ऐसा है कि सिर्फ ये जो है सकाफत शो करते हैं हम. पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रक आर्ट का नाम है, जिसमें जी हम मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफत शो करते हैं. जैसे कि बाबा खैबर हो गया, मारखोर वगैरह हो गए. इस तरह के जी हमारी कंट्री को शो करते हैं ना. From hand-painted eagle to poetic one-liners about love, loss, and life, every inch of these vehicles tell you something about the person behind the wheels. For many drivers, this isn't just a decoration. It's their pride, it's their dignity, and it's their legacy. But what fascinating is, this art is no longer confined to highways. It's finding its ways into businesses, into spaces where people gather, eat, and connect. Places like restaurants are re-imaging truck art not as something to pass by, but something to sit with. ट्रक आर्ट पाकिस्तान की पहचान है. ट्रक आर्ट को हमने इसलिए शामिल किया कि ये वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो है रिकग्नाइज किया जाता है हमारे ट्रक आर्ट को. बहुत अच्छी राय देते हैं लोग. आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है. हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो जुमले लिखे हुए हैं आपके सामने, तो लोग टिकटॉक बनाते हैं खड़े होकर और बहुत अच्छा लगता है हमें. What was once a symbol of the road is now a symbol of the culture. ट्रक आर्ट है, ये पाकिस्तान की तहजीब का पुराना कदीम एक हिस्सा है, सकाफत है, और इट्स क्वाइट यूनिक एंड ऑसम आई बिलीव. And maybe that's the beauty of it, because truck art is never just about the trucks. It was always about people, their journeys, their struggles, their stories. And now these stories are finding their new roads to travel. This is Ahmed Hassan, and thank you for watching.